भैया एक सूखी पूरी देना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मुंबई के छुपे रुस्तम सीजन 2। आज के एपिसोड में आपको जिस जगह पे लेके जाने वाला हूँ ना, ये थोड़ा यूनिक है। बिकॉज मुंबई में मैंने इतनी सारी बार सुना है सिंधी फूड, सिंधी खाना, सिंधी फूड, सिंधी खाना, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, और इतना सारा वैरायटी एक साथ खाना तो मुश्किल होता है। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक ऑथेंटिक सिंधी थाली, जिसमें आपको मिलेगा सब कुछ ऑलमोस्ट। सो चलो। Sindhis don't have a state in India. It's just mostly the language is also almost forgotten. Not a lot of people speak Sindhi, but we wanted to remember Sindhi through the food because again it's so special. So we didn't want Sindhi food to just be restricted to dal pakwan or Sindhi curry or very few items. It's a much bigger meal. So yeah, mainly that was the idea to get Sindhi food into the focus. As I told you, language and state is not there, so food is the only thing we can express ourselves with. So that was one of the major things. थाली में ऐसे क्या डिशेस है दैट यू कैन लाइक गारंटी कि मैं खाते खाते मैं बोलूँ कि मुझे वापस खाना है? So the Sindhi thali which we serve here is firstly it's unlimited because we want everyone to just have a proper experience of it. And there are quite a few items. There are over like 12-14 items. Sindhi curry is very famous. You all might have heard. It's traditionally known as a besan curry. So we Shikarpuris make a tomato curry since the law, like that's how we make our curry. So there's a very little besan, more of tur dal and tomato and khatas, sour flavor, and it's much thinner compared to the besan. And then you have the famous sai bhaji. It's served along with bhuka chawal, which is like onion pulao. And again, along with that, we serve bundi raita, we have some raswale aloo, we serve puris along with that, we have bhindi basal. So yeah, we try to keep the focus on the food, like try and keep it simple, try and keep it authentic as it's completely made out of, like how it was supposed to be made out of home. That's how we got to serve the recipes. For the first time ever, I am going to taste authentic Sindhi thali. So finally, I have what is said as Mumbai's best authentic Sindhi thali in front of me. So I'll start with puri or raswale aloo. कैसे बनाते हैं यार ये? नेक्स्ट हम खाते हैं दरंजी भाजी, जिसको बेसन का रोल या गट्टे की सब्जी भी कहते हैं सिंधी में। लेट्स टेस्ट इट। टेस्ट करके ना समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे टेस्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू भिंडी बसर। भिंडी बसर इज बेसिकली भिंडी की सब्जी बट अनियन, बसर मीन्स अनियन, तो भिंडी, अनियन, टमाटर सब कुछ चलता है दिस टाइप। ऑल द भिंडी लवर्स डू ट्राई दिस आउट। मैंने कहीं सुना था कि स्टीम राइस और सिंधी कढ़ी इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट अ आलू टूक, तो लेट मी ट्राई द आलू टूक फर्स्ट। ये गई सिंधी कढ़ी में। Let me say the main taste of this aloo took is the masala above it. The Sindhi masala, what they say, it is amazing. It is too good. Next, I have sanna pakoda, that is onion और बेसन का पकोड़ा। दो तरीके के राइस है हमारे पास, बट पहला हम ट्राई करेंगे स्टीम राइस विद सिंधी कढ़ी।
super light on your stomach. Next rice is bhuga chawal, which is caramelized with spices and onions. और इसको हम खाने वाले हैं साई भाजी के साथ. Absolutely. फाइनली आई एम डन विथ माई थाली. लेकिन बिना डिजर्ट के कौन सी थाली खत्म होती है. सो नाउ आई हैव विथ मी गुलाब जामुन. हाय मैं मर जावा गुलाब जामुन खा के. सॉरी. सो थाली तो हो गई, डिजर्ट भी हो गई और एपिसोड भी खत्म होने वाला है. तो आप लोग को क्या करना है अभी? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगले एपिसोड का वेट करना. तब तक मैं जाता हूँ और ढूंढता हूँ आपके लिए अगला छोटा. तो बाय.